इसराइल की जानिब से निहत्थे और मासूम फ़लस्तीनी अवाम पर जारी मुजालिम के खिलाफ मशरकी लंदन के वेलेंटाइन पार्क में एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे में नेशनल एजुकेशन यूनियन, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने अक़वाम आलम से गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। इरफानुल हक की ये रिपोर्ट देखिए। गजा में जारी इसराइली फौज की कत्लो गारत थम न सकी। इसराइल ने हजारों बम बरसाकर गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मशरकी लंदन के वेलेंटाइन पार्क में सैकड़ों अफराद ने जमा होकर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में फलस्तीनी परचम और कुतबे उठा रखे थे और वो फ्री फ्री फलस्तीन के नारे लगाते रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि बरतानिया समेत दीगर ममालिक की तरफ से इसराइली मजालिम की हमायत शर्मनाक है। उनका कहना था कि जब तक इसराइल अपने मुजालिम बंद नहीं करता और बेगुनाह बच्चों और खवातीन पर मुजालिम बंद नहीं करता, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। They should be allowed to discuss these feelings openly in school and show their support. Tell the schools we will not be silenced, we do not support the genocide and we will stand up for justice. इस मौके पर पेरेंट्स यूनाइटेड की तरफ से बच्चों के सीनों पर फलस्तीनी बेज लगाकर स्कूल भेजने की मुहिम का भी आगाज किया गया। वालिदैन पर जोर दिया गया कि अपने बच्चों के सीनों पर फलस्तीनी झंडे वाले बेजेस लगाकर स्कूल भेजा जाए, ताकि इंटरनेशनल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले गलत प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाए। Parents United are doing an initiative called a Badge Week for Redbridge students this week. It starts from the 18th of December till Friday. What we want the children to do is to wear these badges with pride every single day for the next week. And we want the parents to send a letter to the school, because we believe every child has a right to express their views and express their support for the Palestinian children. With everything that's going on in Palestine, it's very scary, it's very horrifying, it's very, I don't know how to put it, but it's very scary. And we as a people should keep it in our thing. We need to make sure it's known as it's scary to everyone, because if this can happen in Gaza, it can happen here. If people can say, oh, well, genocide is okay in Gaza, a genocide can happen here, a dehumanization can happen here. Who's to say that it's just, I don't have to word it, but it's very scary. Sorry, I'm really bad at words sometimes. I've come out here locally to Ilford. I live in a different borough, but this is my local action. It breaks my heart that there's not even a local action within my own area. This is the closest that I can get, because there are still so many people that are burying their heads in the sand and making sure that this humanitarian crisis that we are seeing isn't part of their life, when we are all human and we are all part of this. This is our brothers and sisters, it's every one of us that is being affected right now, and we all need to stand out for each other. And I will continue to stand out every single weekend, every single time I can. Well, what's happening in Gaza, it's heartbreaking for us as Palestinian. I am a Palestinian second generation. My mum is Nakba survivor, and for us this is happening every day of our life. So my mum has survived it, but the children in Gaza having the second Nakba, there is hundreds and thousands of them who's not surviving this. Yeah, so my name's Zarina. I'm here today at the vigil for the children, because I can't bear to see what's happening and not make a stand for it. Even those children who aren't being killed, they're traumatized. It's disgusting that this is happening, and we need to demand more of our politicians. This needs to stop now. Obviously, one thing that I want to say, which is very, very important, is that the very first time, if any Western media talks about, they start with Hamas, they start with October the 7th. However, that's proximity, right? No one talks about where the original sin comes from. And another thing is, who is Hamas? They are the children who have been, basically children whose families have been butchered in the past. And the children that are now orphans, what do you think they're going to become? They will be obviously number 2 Hamas. जी, ये जो आज इधर इल्फर्ड में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये फ़लस्तीनी
बच्चों के हक़ के में, और उसके बाद ये गज़ा में जो जुल्म और सितम जारी है इसराइल की तरफ से, हम इसको भरपूर कंडेम करते हैं और हम उम्मत मुसलमान के तमाम हेड ऑफ स्टेट को भी कंडेम करते हैं जो इस वक्त इन मासूम बच्चों के साथ और इन इनोसेंट पीपल के साथ खड़े नहीं हैं। खाली ये इजलास बुलाने से कुछ नहीं होते। जितने भी उम्मत मुसलमान के स्टेट ऑफ हेड है उनको चाहिए कि अमली काम करें और फ़लस्तीनियों का साथ दें और हर किस्म का साथ दें, इनको माली, जानी और फौजी तौर पर भी इनको सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त। हाँ जी, मैं इंडियन वर्कर्स एसोसीएशन ग्रेट ब्रिटेन वालों हैगा ते इंडियन वर्कर एसोसीएशन ने हमेशा ही जो भी ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 70s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, लोकल भी और नेशनली भी। रेडविज का काउंसलर हूँ, तो आज मैं आया हूँ बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बिकॉज दे सी चिल्ड्रन being buried under rubble in Palestine and Gaza, and today to show solidarity with them. At least children have a future here. We don't know what future those children in Gaza would have. At least what we can do is to be here, remember them, and that's what I'm here for. It's horrific, it's horrendous. Everybody has seen it. It's one of the most documented genocides actually in modern history, and it has to be brought to an end. It can't go on, it shouldn't go on, it shouldn't be allowed to go on. And I think the world is waking up to this, and I hope the British government also wakes up to this horrendous reality which we need to stop. गवर्नमेंट का खुद का उनके एजेंडा होते हैं, लेकिन हम जैसे पीपल है हम गिव अप नहीं करेंगे. We have to keep fighting. There is differences locally. There are some changes coming. Kids are being allowed to wear badges in schools slowly but surely. This is a long battle, and inshallah with the continued effort we will make sure this time that we do not forget Palestine until the occupation is ended, and we will continue our battle. This is a people movement, and the people will make the change. Yeah, I mean, the way we look at it, as you said, in Iraq, when the Iraq war was happening, we had 1 million people marching on the streets of London. For Palestine, we've had 1 million people marching on the streets. And that just proves that our system, our democracy is broken. The people who are in power, the media, the global media, the elite who own the media, they don't represent the common people, whether that's here or in Gaza. And that's why so many people are dying with impunity. Might is right was meant to end when the United Nations was formed, but it's just continuing that the big powers are having all the say and all the little people get trampled on. वाज़ेह रहे कि जब से इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू हुई है, बरतानिया की स्टॉप दीवार और इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से वस्ती लंदन समेत बरतानिया के तमाम शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें लाखों अफराद शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर इसराइली बर्बरियत के नतीजे में शहीद होने वाले बच्चों की याद में शमें भी रोशन की गयी। इरफान उल हक, चीफ रिपोर्टर, दुनिया न्यूज़, लंदन।